Hello everyone, welcome back to my channel. So the technique which we are going to discuss today is the reversal of antagonist. So it is a technique which we use in PNF. So this technique is based on the Sherrington principle of successive induction. अब successive induction होता क्या है? An increased excitation of the agonist muscle follows stimulation / contraction of their antagonist. अगर मैं बाइसेप्स का एग्जाम्पल, अगर मैं बाइसेप्स में एक्साइटेशन इंक्रीज कर दूं तो उसकी वजह से जो इसका एंटागनिस्ट है दैट इज़ द ट्राइसेप्स, उसमें स्टिमुलेशन या कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी. सो दिस इज़ द शेरिंगटन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव इंडक्शन एंड रिवर्सल ऑफ एंटागनिस्ट टेक्निक विच इज़ अ टेक्निक विच वी यूज इन PNF is based on this. So it includes 3: dynamic reversal, stabilizing reversal and rhythmic stabilization. So first we will talk about dynamic reversal. तो ये क्या होता है? एक्टिव मोशन चेंजिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अपोजिट विदाउट पॉज और रिलैक्सेशन. ठीक है. नॉर्मली दिस काइंड ऑफ मसल एक्टिविटी इज सीन while throwing a ball, by cycling, walking, etc. अब थेरेपिस्ट के क्या गोल्स होने चाहिए, क्या वो एम सेट करता है जब हम डायनामिक डायनामिक रिवर्सल टेक्निक यूज़ करेंगे? टू इंक्रीज द एक्टिव ROM strength, to increase or develop coordination, to prevent fatigue, increase endurance and decrease muscle tone. Indication: when there is decreased active ROM, there is weakness of the muscle, there is decreased ability to change direction of motion, there is exercise muscle begin to fatigue and relaxation of hypertonic muscle group. So अब इसका डिस्क्रिप्शन, अब इसे करते कैसे हैं? So the therapist resists the patient's moving in one direction, usually the stronger or better direction. ठीक है. As the end of the desired range of motion approaches, the therapist reverses the grip on the distal portion of the moving segment and gives a command to prepare for the change in direction. At the end of the desired movement, the therapist gives the action command to reverse direction without relaxation and gives resistance to the new motion. When the patient begins moving in the opposite direction, the therapist reverses the proximal grip, so all resistance opposes the new direction. The reversal may be done as often as necessary. मतलब कि जैसे मान लो आपने एल्बो फ्लेक्शन का एग्जांपल लेती हूँ मैं इसके अंदर. तो उसमें क्या किया मैंने? पहले पेशेंट को एल्बो फ्लेक्सर्स में यानी कि बाइसेप्स को रेजिस्टेंस दिया. ठीक है. जब बाइसेप्स की पूरी रेंज पूरी हो गई यानी कि एल्बो फ्लेक्शन पूरा हो गया, उसके तुरंत बाद मैंने ट्राइसेप्स की जगह हाथ रख लिया रेजिस्टेंस देने के लिए. ठीक है. और फिर मैंने उसको बोला कि आप एल्बो एक्सटेंशन करो, मैंने उसको रेजिस्टेंस दिया. फिर तुरंत बाद मैंने बाइसेप्स को दोबारा रेजिस्टेंस दिया और इसमें मैंने ब्रेक नहीं लिया, पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए नहीं बोला. सॉरी. तो ये आप देख सकते हो कि ये इमेज है, इसमें ये शोल्डर का फ्लेक्शन एबडक्शन आपको करके दिखा रहे हैं. उसके बाद जो थेरेपिस्ट है उसकी हैंड पोजीशन भी चेंज हुई है टू रेसिस्ट द मूवमेंट इनटू एक्सटेंशन एंड एडक्शन. So normally we start with the contraction of the stronger pattern and finish with the contraction of the weaker pattern. क्योंकि मैंने आपको एल्बो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, बट अभी PNF पैटर्न में कर रहे हैं तो हमें स्ट्रॉन्गर और वीकर कंपोनेंट जो है पैटर्न का वो देखना पड़ेगा पेशेंट का. एग्जाम्पल: रिवर्सिंग लोअर एक्सट्रीमिटी मोशन फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन. Resist the desired pattern of the lower extremity फ्लेक्शन. ठीक है. स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न हमने क्या लिया? इसमें फ्लेक्शन है. तो हम कमांड क्या देंगे? फुट अप एंड लिफ्ट अप योर लेग. एज द पेशेंट लेग अप्रोचेज द एंड ऑफ द रेंज, गिव अ वर्बल कमांड टू गेट द पेशेंट अटेंशन to resist the patient foot during the reverse foot. When the therapist is ready for the patient to move in the new direction, give the new command. As the patient starts to move in the new direction, move your proximal hand so that it also resists the new direction of motion. ठीक है. पहले हमने फ्लेक्शन एडक्शन को रेजिस्ट किया थेरेपिस्ट ने, तो आप इसकी हैंड पोजीशन देख लो थेरेपिस्ट की. ठीक है. फिर उसके बाद जो थेरेपिस्ट की ग्रिप है वो चेंज हो गई है क्योंकि अब हमें एक्सटेंशन एडक्शन को रेजिस्ट करना है. फिर उसके बाद अभी आप देख रहे हो इसमें इसने फर्स्ट इमेज में इसने अपनी पोजीशन चेंज करी हैंड की, और जो सी इमेज है उसमें ये रेजिस्टेंस दे रहा है इनटू एक्सटेंशन एंड एबडक्शन.
मॉडिफिकेशन, अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या आएंगी? इंस्टेड ऑफ मूविंग थ्रू द फुल रेंज, द चेंज ऑफ डायरेक्शन कैन बी यूज टू एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? स्टार्ट द रिवर्सल फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ फ्लेक्शन मोशन। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने फ्लेक्शन कराना है तो पहले पूरी रेंज फ्लेक्शन की आएगी, उसके बाद ही मैं एक्सटेंशन में जाऊंगी। अगर मान लो मेरी मिड रेंज आ गई फ्लेक्शन की और मैंने फिर से एक्सटेंशन में ले गई, ऐसा भी कर सकते हैं। जो स्पीड है यूज्ड इन वन और बोथ डायरेक्शन कैन बी वेरिड। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की स्पीड वेरी हो सकती है। This technique can begin with small motions in each direction, increasing the ROM as the patient's skill increases. Sorry, the ROM can be decreased in each direction until the patient is stabilized. So the patient can be instructed to hold the position at any point in the ROM, and this can be done before and after the reversing the directions. So this technique can begin with the stronger direction to gain irradiation, and reversal should be done whenever the agonistic muscle group begin to fatigue. If increasing strength is the goal, the resistance increases with each change, क्योंकि जितना ज़्यादा resistance होगा उतनी ज़्यादा strength will increase. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. When the patient reaches the end of flexion motion, give a stabilizing command. Keep your leg up there. After the leg is stabilized, change the distal hand and ask for next motion, kick down. अब reversing lower extremity motion with stabilization after reversal. So after changing the distal hand to the plantar surface of the foot, give a stabilization command, and when the leg is stabilized, give a motion command to continue exercise. अब इसमें हमें पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखने हैं कि ओनली यूज एन इनिशियल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, डू नॉट रीस्ट्रेच व्हेन चेंजिंग द डायरेक्शन बिकॉज द एंटागोनिस्टिक मसल्स आर नॉट येट अंडर टेंशन. Resist, don't assist the patient when changing the direction. Change the direction to emphasize a particular ROM. So the next technique is stabilizing reversal. So इसके characteristics क्या होते हैं? Alternating isotonic contraction opposed by enough resistance to prevent motion, and the command is a dynamic command, and the therapist allows only a very small movement. Goals: to increase stability and balance, to increase muscle strength and increase coordination between the agonist and antagonist muscle group. So what are the indication? Decrease stability, weakness, and the patient is unable to contract muscle isometrically and still needs resistance in one way direction. So description क्या होगा? Therapist give resistance to the patient starting in the strongest direction while asking the patient to oppose the force. ठीक है, जो strongest pattern है वहाँ पे हमने resistance दिया. Very little motion is allowed. Approximation or traction should be used to increase stability. When the patient is fully resisting the force, the therapist moves one hand and begin to give resistance in another direction. But ध्यान क्या रखना है? Very small motion is allowed. After the patient responds to the new resistance, the therapist moves the other hand to resist the new direction. For example, trunk stability. So combine traction with resistance to the patient trunk flexor muscle. हमने patient के जो trunk flexor muscle है उनको resistance दिया. When the patient is contracting that muscle, maintain the traction and resistance with one hand while moving the other hand to approximate and resist the patient trunk extension. फिर हमने पहले ट्रंक फ्लेक्सर्स को रेजिस्टेंस दे रहे थे, उसके बाद हम ट्रंक एक्सटेंसर्स को रेजिस्टेंस दे रहे हैं. सो एज द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द न्यू रेजिस्टेंस, मूव द हैंड दैट वाज स्टिल रेडी टू रेजिस्ट द ट्रंक एक्सटेंशन. ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन एज ऑफन एज नीडेड टू बी श्योर द पेशेंट इज स्टेबल. इसके मॉडिफिकेशन क्या होंगे? द टेक्निक कैन बिगिन विथ स्लो रिवर्सल, यानी कि जो इससे पहले हमने बात करी थी डायनामिक रिवर्सल की, एंड प्रोग्रेस टू स्मॉलर रेंजेस अंटिल द पेशेंट इज स्टेबलाइजिंग. द स्टेबलाइजेशन कैन स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गर मसल ग्रुप टू फैसिलिटेट वीकर मसल ग्रुप. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ irradiation. The resistance may be moved around the patient so that all muscle group work. So the speed of reversal may be increased or decreased. Example for trunk and neck stability. So after the upper trunk is stable, the therapist may give resistance at the pelvis to stabilize the lower trunk. Next, the therapist may move one hand to resist neck extension. ये आप देख सकते हो कि इसमें पहले इसने स्टेबलाइज किया अपर ट्रंक को, फिर वन हैंड कंटिन्यूस रेजिस्टिंग द अपर ट्रंक, रेस्टिंग ऑन द अपर ट्रंक, एंड द थेरेपिस्ट अदर हैंड चेंज टू रेजिस्ट एट द पेल्विस.
Points to remember: starting working in the strongest direction, and the therapist can begin with slow reversal and decrease the range until the patient is stabilizing. Sorry. The third technique and the last technique under this is rhythmic stabilization. So there is alternating isometric contraction against resistance. पीछे वाले में क्या था, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन था, और वो हम कब दे रहे थे, जब पेशेंट आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था. Rhythmic stabilization में we give isometric contraction and no motion is intended, whereas in the previous one very little motion was allowed. So goals: to increase passive and active ROM, to increase strength, stability and balance, and to decrease pain. Indication: limited ROM, pain, joint instability, weakness in the antagonistic muscle group, and decreased balance. Contraindication: cerebellar involvement, or when the patient is unable to follow command due to different reasons. To description: the therapist resists an isometric contraction of the agonist muscle group. The patient maintains the position without trying to move, and the resistance is increased slowly according to the level of the patient. And when the patient is responding fully, the therapist moves one hand to begin resisting the antagonistic motion at the distal part. Neither the therapist nor the patient relaxes as the resistance changes. मतलब मोटा मोटा आपको इसमें क्या देखना है कि आपने पहले एगोनिस्ट को आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कराया, देन विदाउट रिलैक्सेशन आपने उसके एंटागोनिस्ट को भी आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कराया आइसोमेट्रिकली, सो देयर विल बी नो मोशन. As the patient responds, the therapist moves the other hand to resist the antagonistic motion also. ट्रैक्शन एंड अप्रॉक्सीमेशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. एंड द रिवर्सल आर रिपीटेड एज ऑफन एज नीडेड. सो थेरेपिस्ट शुड यूज़ अ स्टैटिक कमांड, स्टे देयर, डोंट ट्राई टू मूव. हमें ऐसी कमांड देनी है यहाँ पे. सो आप देख सकते हो रिदमिक स्टेबलाइजेशन दे रहा है ये शोल्डर का फ्लेक्शन एबडक्शन, और फिर दूसरा अपोजिट इसका एक्सटेंशन एडक्शन में, बट देयर इज नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस हेयर. एग्जाम्पल: ट्रंक स्टेबिलिटी में रेजिस्ट एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेशेंट ट्रंक फ्लेक्सर मसल का हमने कराया. फिर उसके बाद हमने थेरेपिस्ट ने पोजीशन चेंज करी अपने हाथों की, और ट्रंक एक्सटेंसर्स जो है उनका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराना है. And the direction of contraction may be reversed as often as necessary to reach the chosen goal. Modification: the technique can begin with stronger group of muscle for facilitation for the weaker muscle group, क्योंकि reversal of antagonist is based on the principle of successive induction. Stabilizing activity may be followed by a strengthening technique. To increase ROM, stabilization may be followed by asking the patient to move farther into the restricted range. For relaxation, the patient may be asked to relax all muscle group at the end of technique. And to gain relaxation without pain, the technique may be done with muscle distant from the painful area. Example: trunk stability and strengthening. So resist alternate trunk flexion and extension जो हम कर रहे थे. And when the trunk is stable, give increased stabilization resistance to the stronger direction. Then ask for moving into the direction to be strengthened. मतलब पहले हमने रिदमिक स्टेबलाइजेशन दिया, उसके बाद हमने स्ट्रेंथनिंग कराया ऑफ द वीकर मसल ग्रुप. ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या होंगे: यूज़ अ स्टैटिक कमांड, क्योंकि इसमें हमें कोई मोशन नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन इज आइसोमेट्रिक. स्टेबलाइजेशन में बी डन विद मसल ग्रुप डिस्टेंट फ्रॉम अ पेनफुल एरिया. स्टेबलाइजेशन में बी फॉलोड बाय अ स्ट्रेंथनिंग टेक्निक. अब रिवर्सल ऑफ एंटागनिस्ट में हमारी 3 चीज़ें आती हैं: डायनामिक रिवर्सल, ऑल्सो नोन एज स्लो रिवर्सल, स्टेबलाइजिंग रिवर्सल एंड रिदमिक स्टेबलाइजेशन. तो डायनामिक रिवर्सल में क्या होता है? एक्टिव मोशन होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अपोजिट एंड देयर इज नो पॉज और रिलैक्सेशन. स्टेबलाइजिंग रिवर्सल में क्या होता है? अल्टरनेटिंग आइसोटोनिक मूवमेंट होती है ऑफ द अपोजिट मसल ग्रुप एंड वेरी स्मॉल मोशन इज अलाउड. Whereas in rhythmic stabilization, there is alternating isometric contraction of the muscle group and no motion is allowed because the muscle contraction is isometric. So what is the difference between stabilizing reversal and rhythmic stabilization? So in stabilizing reversal, there is isotonic muscle contraction, whereas in rhythmic stabilization, there is isometric, the intention to move, and the rhythmic stabilization, there is no intention to move.
In stabilizing reversal, we give the command stay there against me, whereas in rhythmic stabilization, static command is given hand grip. In stabilizing reversal, changes with each change in direction, and change from one part of the body to another part is allowed. Whereas in rhythmic stabilization, may grip on both sides and change the direction of resistance slowly. Muscle activity in stabilizing reversal is from agonist to antagonist, then again to agonist, and then again to antagonist. Whereas in rhythmic stabilization, agonistic and antagonistic activity together, possible co-contractions. Direction in stabilizing reversal, patient needs one direction. To control both direction together is too difficult. Whereas in rhythmic stabilization, patient is still able to control both directions. Thank you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.